It is an honor to welcome the esteemed chief guest of the occasion, Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla, and the other dignitaries, Honorable Speaker of the Odisha Legislative Assembly, Srimati Surama Padhi, I reiterate, it is an honor to welcome the esteemed chief guest of the occasion, Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla, and the other dignitaries, Honorable Speaker of Odisha Legislative Assembly, Srimati Surama Padhi, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Shri Kanak Vardhan Singh Deo, Honorable Member of Parliament, Bhubaneswar, Srimati Aparajita Sarangi, Honorable Minister of Law, Works and Exercise, Government of Odisha, Sri Prithviraj Harichandan, esteemed Mr. Otto Roman Sonen Hosner Spur, former Vice President of Ecuador, esteemed Dr. Chandraprakash Dwivedi, Indian actor and film director, respected Mr. Akshay Mathur, Senior Director, Asia Society of Policy Institute, Delhi, esteemed founder, KIIT Case and Games, Professor Achyuta Samanta, Honorable Chancellor of KIIT deemed to be University, Sri Ashok Parija, respected Vice Chancellor, KIIT deemed to be University, Professor Saranjit Singh, and respected Professor N.L. Mitra, Professor Emeritus, KIIT School of Public Policy and School of Law. I request everyone to rise for the national anthem. As we commence this significant event, let us honor our tradition by lighting the ceremonial lamp. May I request our respected dignitaries on the dais to join us in this auspicious ceremony. Thank you, everyone. Given the formal nature and time constraint of the event, we request our esteemed dignitaries on the dais to observe the scheduled time outlined in the agenda. Now,
It's my great honor to invite the esteemed founder of KIIT, KISS and KIMS, Professor Achyuta Samanta, to deliver the welcome address. So, good evening everybody present here. Today on the occasion of one very good occasion, the inauguration of KIIT School of Public Policy under KIIT University in the hands of the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Government of India. We have with us on the dais Honorable Speaker of the Lok Sabha as the chief guest, esteemed Sri Om Birla ji, present on the dais. Similarly, we have with us Honorable Speaker of Odisha Legislative Assembly, esteemed Madam Srimati Surama Padhi. We have also with us Honorable guest, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, respected Sri Kanak Bardhan Singh Deo ji. We have also with us on the dais Honorable Minister of Law, Works, Excise, Government of Odisha, respected Sri Prithviraj Harichandan ji. Also we have with us Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Bhubaneswar, respected Madam Srimati Aparajita Sarangi ji. We have also with us international guest, Honorable former Vice President of Ecuador, respected Mr. Otto Raman. Also we have with us our other guest of eminence, respected Padma Shri Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji, the Indian actor and film director. We have also with us on the dais Honorable respected Sri Professor N.L. Mitra ji, the Professor Emeritus of the schools and also KIIT Law School, former Vice Chancellor of many Indian law universities and also Chancellor of KIIT University. And also we have with us our own Honorable Chancellor of this KIIT University, respected Sri Ashok Kumar Parija ji. We have also with us on the dais our own Vice Chancellor of KIIT University, Professor Sanjit Singh. And also we have with us our respected Mr. Akshay Mathur ji, Senior Director of the Asia Society Policy Institute, Delhi. And also on the audience side, all the esteemed distinguished personalities from the different parts of the Odisha state, different parts of the communities. Particularly we have with us our honorable judges and also respected judicial officers, respected advocates present here, respected bureaucrats, policy makers, academicians, writers, poets, and many other distinguished personalities from the film, spiritual sector, particularly from the business sector present here, and other invited guests, and our also KISS University Vice Chancellor and many others are sitting, and also respected Ma'am Claudia, the wife of the Vice President of Ecuador, the present on the desk, and other invited guests, and particularly our respected family members both from KIIT University, KISS University, and also lastly respected press persons both from electronic print media, and my lovable KIITians, particularly from the Rajasthan, sitting here with a very beautiful attire. हम लोग बहुत खुश हैं, आज गर्व अनुभव कर रहे हैं
जे हम लोग कीट का हर एक प्रोग्राम को यहाँ पर आप लोग का सामने ला रहे हैं, जो उड़ीसा के लिए अच्छे है, भारत के लिए अच्छे है, हम लोग के लिए अच्छे है। दैट इज़ द इनागुरेशन ऑफ KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लेकिन हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं जो इसको इनागुरेशन करने के लिए हम लोग का बीच में पधारे हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष सम्मानस्पद श्री ओम बिरला जी। आप लोग सब ओम बिरला जी को सब टाइम लाइव देखते होंगे, लोकसभा टीवी में, संसद टीवी में एंड अदर प्रोग्राम्स में। लेकिन आज भी आप लोग यहाँ स्टेज में लाइव देखिए। एंड आप लोग सबको माननीय अध्यक्ष के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन तब भी टाइम कॉन्स्टेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय खुद यहाँ से स्ट्रेट एयरपोर्ट जाएंगे, फ़्लाइट पकड़ेंगे। हम लोग ऐसे भी थोड़ा लेट चल रहे हैं, तब भी मैं आशा व्यक्त करता हूँ, स्वागत करूँगा कृतज्ञता के साथ। 2 शब्द बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। आप लोग सबको पता है दैट माननीय श्री ओम बिरला जी एक बेहतरीन इंसान है। उनकी निष्ठा और समर्पण ने संसद को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। वो जितने कुशल अपने काम में हैं, उतना ही उनका दिल भी साफ है। उनके नेतृत्व में संसद में रिकॉर्ड चर्चाई हुई और हर सांसद को अपनी बात रखने का अवसर मिला। 2019 में पहली बार मेरा मुलाकात हुआ था लोकसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी से। मैं विश्वास कर नहीं पा रहा हूँ। उसी टाइम में आग्रह प्रकाश किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक KIIT विश्वविद्यालय है, KIIT है, आप वहाँ कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट होके आइए। इसी पेंडाल में माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में पहले बार यहाँ पर कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट बन के आए। उसी दिन से अभी तक इतना प्यार मेरा काम को दिए, मुझे दिए, सम्मान किए। आप लोग सबको पता है, संसद में, लोकसभा में बार बार किस का बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशंसा की। इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन जो प्रशंसा किए सब लोग, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय वो लोग को समय दिए, खुद भी उसमें डूब पड़े, जो प्रशंसा मैं भी करता हूँ। एनीहाउ, मैं इसके लिए जितना भी प्रशंसा करूं, जितना भी आभार व्यक्त करूं, वो बहुत कम होगा। इसलिए ना माननीय अध्यक्ष महोदय किस का कार्य के लिए सराहना की। उनकी मुस्कान मुझे बहुत पसंद है और उनका संविधान और प्रक्रिया को ज्ञान सराहनीय है। वो अच्छे काम करने वाले से प्रेम करते हैं। इसलिए अभी भी जो आए हैं, प्रेम के लिए आए हैं। बिकॉज उड़ीसा में सबको पता है अभी दिवाली है, नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में 2 दिन का बाद दिवाली का अंदर में भी माननीय अध्यक्ष वाचस्पति महोदय को उड़ीसा में पाना, यानी इस प्रोग्राम के लिए ये आश्चंबित है। तब भी इतने ही, मैंने इतना प्यार, इतना अच्छा दिल का आदमी, इतना सब कुछ मैं भाषा में उसको व्यक्त कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इतना ही बोलूँगा, जो आपको चरण स्पर्श कर रहा हूँ, आपके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ। आप जो सेकंड बार आए, ये इतिहास होके रहेंगे KIIT में। आज तक कोई भारत व लोकसभा का वाचस्पति नहीं आए थे। आप 2019 में आए थे, फिर अभी 2024 में आए, 2 बार आए। इसके लिए हम लोग एंटायर KIIT परिवार, किस परिवार, मेरा तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञता से स्वागत करता हूँ।
आशा करता हूँ जे आपका आशीर्वाद ऐसे मेरा अच्छा काम के लिए सब दिन रहेगा। आपको तो पता है मैं समर्पित जीवन यापन करता हूँ, बैचलर हूँ, मेरा कुछ भी नहीं आगे पीछे, मेरा एक ही है समाज सेवा करना। और समाज सेवा कर रहा हूँ 25 साल उम्र से, 4 साल उम्र से पिताजी को खो के 25 साल उम्र से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। 33 साल हो गया मैं समाज सेवा ही कर रहा हूँ, और जितना दिन मैं जिंदा हूँ समाज सेवा ही करते रहूँगा, लोग का काम नहीं रहूँगा। तो इसलिए आपका आशीर्वाद ज़रूर रहेगा। ये जो अभी आए मुझे सब लोग बोल रहे थे, लेकिन मैं रियली ग्रेटफुल एंड आपको और एक बार बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कीट परिवार तरफ से एंड मेरा तरफ से स्वागत भी करता हूँ। धन्यवाद। आज भी एक अच्छा ऐतिहासिक दिवस है कीट किसके लिए। एक पंडाल में डैश में 2 वाचस्पति है, देश का वाचस्पति, राज्य का वाचस्पति, दोनों वाचस्पति। माननीय श्रीमती सुरमा पाड़ी महोदया, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, आप लोगों को सबको पता है, तो शी इज लेडी, शी इज वेरी डायनामिक, वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। शी वाज आल्सो ऑनरेबल मिनिस्टर इन द प्रीवियस गवर्नमेंट 2004 में। नाउ शी इज हेल्स फ्रॉम द रणपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड शी इज ऑल्सो heading and managing the entire Odisha Legislative Assembly with all her capacity and everything. Today we are very much happy that she is also gracing this occasion. On behalf of entire gatherings, on behalf of me, on behalf of KIIT, I welcome you ma'am. आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कनकवर्धन सिंहदेव जी, आप लोग को पता है डेप्यूटी चीफ, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा सरकार का, बहुत अच्छे आदमी हैं, दिल खुल आदमी है, दिल खुश करते हैं सबको, वेरी वेल बिहेव। राजा है, रॉयल फैमिली से आते हैं, मंत्री है, पहले भी मंत्री था, वो मंत्री हो नहीं हो खड़ा हो जाएंगे तो सब लोग ताजुब हो जाएंगे। दैट इज कनकवर्धन सिंह देव। इन द डिपार्टमेंट एनर्जी एंड एग्रीकल्चर दोनों को अभी होल्ड कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये तूफान जो हुआ था उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर एंड एनर्जी। तो बड़ा शुभेच्छु है, बहुत प्यार करते हैं। मैं 2000 मसीहा से पहले से उससे जुड़े हूँ बहुत अच्छे से। पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, जब टेक्निकल एजुकेशन इंडस्ट्री अंडर में आ रहा था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में, तब से बहुत अच्छा से प्यार करते हैं। मैं माननीय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री कनकवर्धन सिंहदेव को कृतज्ञता के साथ स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। एंड हम लोग का बीच में है पृथ्वीराज हरचंदन जी, ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ, वार्स एंड एक्साइज, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, वेरी डायनामिक, लाइक फादर लाइक सन। जैसे विश्वभूषण हरचंदन जी रोक ठोक बोल देंगे, वैसे स्ट्रेट और रोक ठोक बोल देंगे एंड काम करके दिखाएंगे। दिखाए हैं बहुत काम, अभी आप लोग को पता है। तो मैं भी उसका घर से पिताजी से बहुत जुड़े हूँ, मैंने बिफोर 2000। तो मैं बहुत खुश हूँ। माननीय पृथ्वीराज हरचंदन जी मंत्री गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ऑल्सो ग्रेसिंग दिस ओकेजन। आपको कि भी मैं कृतज्ञता के साथ स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे खुशी का बात है माननीय सांसद लोकसभा भुवनेश्वर, आज माननीय सांसद लोकसभा भुवनेश्वर बोले जे डॉक्टर सामंत आप मुझे आभार व्यक्त नहीं करेंगे, मैं आपको आभार व्यक्त करूंगा। किस लिए? माननीय सांसद महोदय को पता नहीं था उसका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा आदिवासी संस्था है, सबसे बड़ा आदिवासी संस्था है। आज सर्टिफाइड बाय द गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 टाइम। माननीय सांसद को पता नहीं था सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी KIIT, which was started with only 5,000 rupees in 2 rented house in Bhubaneswar, now spreading over more than 30 campus with 30 million square foot built up area. In 36 square kilometer area it is spreading. सांसद ने जब सुने, देखे तो नहीं अभी तक, बोले क्या है? मैं बोला मैम इतने ही नहीं है। कहला और क्या है? बोले यू विल फील हैप्पी, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विथ 2 लाख पॉपुलेशन, 2 लाख मेंबर्स। कहला हाउ? बोले 40,000 चिल्ड्रेन एट KIIT, 40,000 students at KIIT from pan-India and from 65 countries, including Rajasthan 350, 20,000 permanent staff, 100,000 our own family member,
20,000 staff into 5, 1 lakh, 2 lakh family member in this only KIIT and KIIS. And all these things have come up within 25 years with the blessings of God, only blessings of God, and support from one and all definitely, because we started with 5,000 rupees in my pocket when I was doing teaching job in a college without any background, banking. भगवान ने क्या सृष्टि किया है। आज माननीय सांसद महोदया इतना गर्व अनुभव, अभी मुझे बोले अरे इसलिए पार्लियामेंट में इतना प्रशंसा हो रहा है, बोले हाँ मैम इसलिए प्रशंसा हो रहा है। तो एनीहाउ हम लोग सब खुश है। मिनिमम माननीय सांसद के लिए आई ओपनर हुआ, वो बहुत खुश है, मैं भी बहुत आभारी हूँ माननीय, बिकॉज जब भी कुछ बोलता हूँ इतना अच्छी है, इतना अच्छे हैं, कभी कोई बोलेगा एक शब्द कीट के बारे में जंप करके खा जाएंगे उसको। और अभी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वो नहीं देख के ओनली उसका प्यार मेरे लिए था, जंप करता था। अभी सब देखने के बाद पूरा लायनेस जैसे कोई कुछ बोले उसका ऐसे गला दबा देंगे, मत बोलो, आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भुवनेश्वर। एनीहाउ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, रिश्ता है। मैडम इज ए ब्यूरोक्रेट, वेरी टॉप ब्यूरोक्रेट, अभी वेरी डायनामिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब कमिटी में प्रधानमंत्री जी, लोकसभा स्पीकर सब उसको रखते हैं, बहुत अच्छा डिलीवरी है, सब कुछ है। हम लोग भी गर्व अनुभव करते हैं जो ऐसे सांसद यहाँ से चुन के गए हैं लोकसभा में। आगामी दिन में मैडम का दायित्व है, ये संस्था और भी आगे कैसे बढ़ेगा, बिकॉज ये जितना आगे बढ़ेगा सारा दुनिया में इसका प्रशंसा होता है, सारा दुनिया में मैडम को उतना अच्छा लगेगा। इसको तो भगवान ने आशीर्वाद देके यहाँ तक ले आया। तो इन्हीं ने माननीय सांसद महोदय श्रीमती अपराधा षडंगी महोदय को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एंड आप लोग सबका तरफ से, मेरा तरफ से, कीट किसका परिवार तरफ से मैं कृतज्ञता के साथ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग बहुत खुश है दैट वी आर वेरी मच हैप्पी एंड ऑनर्ड, वी आर विथ अस वन befitting persons on the inauguration of the KIIT School of Public Policy, no other than Honorable former Vice President of Ecuador, respected Mr. Otto Ramanji, a product of Harvard School, and whose insights on public policy will be invaluable on our school's journey. He took the pain of coming all the way from Ecuador to grace us with his presence, along with Madam Claudia. And I really very much happy and honored, Dr. and Mr. Otto. I welcome you and also the Madam Claudia for this occasion. He is an economist, businessman and broadcaster, and was elected Vice President of Ecuador in 2018. And during his tenure, he has been working very hard for sustainable development in order to align the international agenda with the Ecuadorian National Development Plan. And you all, Mr. Otto, will be happy to know that this is the best organization in the world to implement the sustainable development goals. We are in true sense maintaining sustainable development goals. And anyhow, I welcome you once again. Thank you very much. और एक है, आप लोग का बीच में स्टेज में बैठे, आप लोग का अट्रैक्शन है। आप लोग चाणक्य देखे होंगे 1991, क्या सीरियल है, क्या आदमी है, उसको जो सोचा था, उसको जो लिखा था, उसको जो डायरेक्शन दिया था, उसमें जो मेन रोल किए थे, he is no other than our honorable guest now, Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji. The best iconic actor and the director, so also the writer, everything, screenwriter. So we are very much happy because public policy means consists of all these things. And you are the right persons to grace this occasion, Dr. Padma Shri Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji. I welcome you also, sir. Thank you very much for coming. Exclusively आप सुन के यहाँ पर आए हैं देखने के लिए,
अभी आप जरूर मन में संतोष व्यक्त करेंगे, एक दिन चला गया बॉलीवुड से, लेकिन वेस्ट नहीं हुआ। एंड हम लोग का अंदर बैठे हैं आवर रेस्पेक्टेड मिस्टर अक्षय माथुर जी, सीनियर डायरेक्टर ऑफ द एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, हु हैज बीन विथ अस सिंस द इंसेप्शन ऑफ KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, guiding us with his expertise and also brainstorming, and he will be guiding in the future also. So I welcome you also, Akshay Mathur ji. Thank you very much. And our other three seasoned family persons from the KIIT बैठे हैं. It is their functions. मैं खड़ा हूँ. Be it our honorable Chancellor Ashok Parija ji, honorable Professor NL Mitra ji, or honorable Vice Chancellor संजीत सिंह जी, आई एम वेरी मच हैप्पी दैट दिस किड्स, हम लोग KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वी आर ओपनिंग अंडर देयर गाइडेंस, चांसलर NL मित्र एंड ऑल्सो द वाइस चांसलर. वी आर ऑल्सो इक्वली हैप्पी दैट विभू महापात्र, डायरेक्टर रिसर्च, इज ऑल्सो अपॉइंटेड. मिस्टर आदित्य इज डूइंग हार्ड फॉर द कोलाबोरेशन एट्सेट्रा, and also our other staffs, family members. And mainly, we are very much happy that, please, it is my pleasure to extend the heartiest welcome to other two persons. They are online, because KIIT School of Public Policy from the beginning partnered with the United Nations System Staff College, UNSSC, headquarters is in Italy. So his director, Dr. Jafar Javan, he will speak online just now for 2 minutes. And similarly, respected Madam Nutan Kapoor, the head of the Indian Council of World Affairs under the Ministry of MEA. We have signed MOU with this best organization. One is international, one is Government of India. And both of them were to come and grace this occasion. Because of this cyclone, they have cancelled the programs in the last moment. And we welcome both of them. At the same time, we are very much grateful to both of them for collaborating with KIIT School of Public Policy since its inception. Now we listen to them, what language they are speaking for this KIIT School of Public Policy. And also, finally, हम लोग का बीच में बैठे हैं ऑनरेबल जजेस, मुझे बोला ऑनरेबल जुडिशियल ऑफिसर्स बैठे हैं, एडवोकेट बैठे हैं, मैनी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी वगैरह, सब लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं. तो मैं यार ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, बहुत समय ले लिया हूँ. तो आप लोग को भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. BCI मेंबर सब बैठे हैं, सीनियर एडवोकेट DP दल से लेके सब लोग विद्वान व्यक्ति यहाँ, सब लोग बहुत विद्वान व्यक्ति सब यहाँ बैठे हैं. तो सब लोग आपको मैं और एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता के साथ स्वागत करता हूँ. आप लोग सबको KIIT किसके बारे में पता है, जो कितना अच्छा चीज़ भगवान ने सृष्टि किया है. मैं एक छोटा माध्यम हूँ, बिकॉज कोई एक आदमी इसको कर नहीं पाएगा, कभी संभव नहीं है. इतना जल्दी कोई आदमी ये सब करेगा, कभी संभव नहीं है. हर पल में मैं भगवान का आशीर्वाद फील करता हूँ, दैट टू इन द स्टेट लाइक उड़ीसा यहाँ पर. तो इतना जो अच्छा चीज़ बना है, आप लोग का आशीर्वाद कामना करके मैं रहता हूँ. ये चीज़ जितना आगे बढ़ेगा, भुवनेश्वर का मान सम्मान, उड़ीसा का मान सम्मान, और आप लोगों को सबको पता है जयदेव विहार से लेके नंदन कानन एक पान का दुकान भी नहीं था व्हेन वी एंटर्ड इनटू 93-94 दिस एरिया. नाउ इट हैज़ बिकम द पॉश एरिया ऑफ द एंटायर सिटी. क्या नहीं है, बस सब कुछ. तो और एक बार मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ. Thank you, sir, for the address. I would now request Honorable Chief Guest Shri Om Birla to inaugurate KIIT School of Public Policy.
sir. Again, I would invite Honorable Chief Guest along with other dignitaries on the dais to release the information brochure of KIIT School of Public Policy. Thank you all. I would now request Professor N.L. Mitra, Professor Emeritus, KIIT School of Public Policy and School of Law, to address the audience. Honorable Speaker, sir, I take your permission to give a very important information to our Ecuador Vice President. One of your countrymen, your citizen, is our student in our LLM program. Yeah, so you are aware of that? Good. So that is the reach of KIIT. Please lend your ears because I have a bad throat. I have 4 minutes to spare, 4 minutes. Of course, my time is already up. My time was from 5:39. So time is already up. Now, before I request and thank our Honorable Speaker, sir, for inaugurating our School of Public Policy and Governance, I like to have 2-3 words. In one, which was one of the very important days of my life, in 2002, when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of the country and Advani ji was the Home Minister, I had the occasion to give a presentation before them about the reform of administrative services of the Government of India. Because in one of our articles I have already critiqued by saying that we are following the same tradition of the imperial government and IOS cadre is same, and in the process, perhaps one day, quota will take over the administrative service, and it has really happened so. So now it is a culture of quota or Akash, and then about few lakhs of young candidates, they appear for the exam, and then there is a selection of madras, and I have seen, because I stayed in such an area where this type of Baba, IAS Baba schools are conducted in Bangalore. Now, this is not the public services. This is not the one. And then we suggested that let us also have at least 60% of our public services people appointed from the age of 17, 18, like this army, Indian Military Academy, okay, we must have also like that, so that at least 60% of our young mind, they are actually attuned to the public policy design, their humility. You know, if you are become a public servant, today public servant means public or servant, not public servant. So today's situation has come like that, because at the age of 35, after competing in quota system, if you become a kind of a public services person, you generally forget that public service is a different type of motivation, different type of service, different type of angle. Now, that actually meant that we require a full training courses, a full education. We call it epistemology of the system. You require epistemology of your administrative system. That is actually missing, sir. So maybe, and it was, at that time, it was very, in 2002,
Now already all 22 years gone. Atal Bihari Vajpayee ji was very glad about that, and he said, yes, that is the way. But nothing could have been done, and perhaps that report is also not seen the light of the day. Now, that was one of the inspiration that made us a kind of a public policy school in National Law School, Bangalore. And then I had occasion to also go to JNU to establish another school called School of Governance. And I thought that this is a disjoint lot. Here is an example where we have across the world citizens coming and joining. And then I'm sure one day this public policy school would give you, your country, some of the illustrious, public services men of your country. Definitely that is going to happen. Now, having said that, I find two types of economists are there in the world. One type of economists, they say, government should govern, businessmen should do business. Government should govern, businessmen should do business. There are other people who are the followers of Keynesian economics who say if the government does only govern and then people will be frustrated about the services, people will try to throw out, as it has happened in France, people will throw out the government. So it is the responsibility of the government for the purpose of best or most of the benefit for the largest benefit for the largest number of people. That's the government's job. Largest benefit to the largest number of people. That type of economists are also there. So there are two types of economists. Now I have already been taken this challenge as a kind of understanding that we require a different type of schooling systems for our public services, and therefore we created another facility for public policy, school and governance. Now this is therefore a kind of a forward mission of the school, and I am sure one day we will supply the human resources of the entire country. I thank you very much because my time is also up. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. Thank you. Thank you, sir. We have some honored guests amongst us who have given their consent to join us in online mode. They could not join us in person due to the impending cyclonic storm. First, we have Dr. Jafar Javan, Director of United Nations System Staff College in Turin, Italy, to address the gathering. Distinguished guests, members of the KIIT family, honorable dignitaries, ladies and gentlemen. It is with great honor that I join you today, albeit virtually, to celebrate a momentous occasion, the official launch of the KIIT School of Public Policy. This day marks not only a significant milestone for KIIT University, but also for the future of public policy education in India and beyond. I extend my deepest congratulations to the founder, Dr. Achivata Samanta, for your relentless and inspiring commitment to education and social empowerment. My greetings also go to Mr. Dwiti Vikramaditya, Vice President and Architect of our collaboration. KIIT has set truly a global example by blending academic excellence with an unyielding dedication to community service and a strong connection to KISS, the Kalinga Institute of Social Sciences, home to tens of thousands of young people from the indigenous community. It is no surprise that KIIT holds numerous awards and has been awarded special consultative status with the United Nations Economic and Social Council. Today, we gather to launch a school that promises to shape the next generation of public policy professionals, individuals who will undoubtedly
be called upon to solve the pressing global challenges we face today: climate change, economic inequality, threats to peace and security, and the ever-deepening divisions in our world. In this context, I am pleased to highlight the partnership between the United Nations System Staff College and KIIT University, formalized through a recent memorandum of understanding. This collaboration reflects our shared commitment to fostering a new kind of leadership, one that is grounded in the values of multilateralism, inclusivity, and dialogue. As part of this partnership, the UNSCC is honored to contribute to the development of the School of Public Policy by assisting in the creation of its syllabi and offering classes on the intricacies of multilateralism and the role of the United Nations in promoting peace and sustainable development. Further, our collaboration extends beyond the classroom. Together with KIIT, we will embark on the Nelson Mandela Project for Social Change. This ambitious global initiative seeks to build trust-based relationships between people and institutions, promote dialogue, and foster consensus in governance. Inspired by Nelson Mandela's legacy of resilience, empathy, and leadership, this project will serve as a beacon of hope and a platform for social transformation, helping to shape inclusive and peaceful societies across the globe. The world today is marked by unprecedented challenges, but I firmly believe that it is through initiatives like the Nelson Mandela Project for Social Change and institutions like the KIIT School of Public Policy that we can find solutions. In closing, I want to reiterate the United Nations System Staff College unwavering support for this partnership. I am confident that together we will empower future generations of leaders to navigate the complexities of public policy, drive positive social change, and ultimately build a world that reflects the shared values of justice, peace, and prosperity. Thank you once again for the opportunity to be a part of this historic moment. I wish the KIIT School of Public Policy every success in this journey. Thank you, sir. Next, I invite Mr. Shombi Sharp, UN Resident Coordinator in India, to speak a few words to the audience. Distinguished speakers and guests, Namaste, Namaskar. On behalf of the United Nations System in India, it is a privilege to send my warmest congratulations to the Kalinga Institute of Industrial Technology on the inauguration of the KIIT School of Public Policy. Although I cannot be there with you in person, unfortunately, I am honored to take part in this launch and recall fondly my visit to the KISS and KIIT campuses earlier this year. The launch of this school comes at a critical time when the world is facing unprecedented challenges. Effective public policy is key to addressing complex issues such as climate action, inequality, and sustainable development. As United Nations Resident Coordinator in India, I see firsthand the importance of strong institutions and well-trained leaders in advancing the Sustainable Development Goals. The KIIT School of Public Policy is poised to become a vital hub for developing leaders who can craft solutions that not only benefit Odisha and India, but also contribute to global progress. On practical skills, interdisciplinary learning, and leadership, this school will prepare students to navigate the ever-changing landscape of governance and development. I am glad the UNSSC Turin, Italy, and ICWA are knowledge partners for this school. And I commend Dr. Samantha and the KIIT team for their vision and commitment to shaping the leaders of tomorrow. I look forward to seeing the impact this school will have on public policy and sustainable development in the years to come. Thank you very much. All the best wishes for a successful journey ahead. Bahut dhanyavad, dhanyabad. Thank you. Thank you, sir. Now may I please request Ms. Nutan Kapoor Mahavar, IFS,
Additional Secretary of the Indian Council of World Affairs, Ministry of External Affairs, Government of India, to share her insights with us. Professor Samantha, founder KIIT and KISS, dear friends. On behalf of India's oldest foreign policy think tank, the Indian Council of World Affairs, I am delighted to extend my warmest congratulations to KIIT on the inauguration of the KIIT School of Public Policy. As a knowledge partner, ICWA is proud to be associated with this forward-looking initiative, which will undoubtedly play an important role in shaping future leaders equipped to navigate the complexities of global and national governance. In today's interconnected world, the role of public policy cannot be overstated. The world is constantly evolving, and we are witnessing rapid changes in international relations, global trade, and diplomatic engagements. The KIIT School of Public Policy is a timely response to these demands. By emphasizing interdisciplinary learning, leadership development, and practical application, this school will prepare a generation of thought leaders, policymakers, and decision makers who will contribute to shaping not only India's governance but also world affairs. As an institution dedicated to research and dialogue on international relations, ICWA is confident that this collaboration with KIIT will foster a deeper understanding of global dynamics among students and scholars alike. The ability to critically assess world events, engage with diplomatic discourse, and contribute to shaping policies that promote peace, security, development, and cooperation is a key part of the public policy landscape. We are excited to support the development of the KIIT School of Public Policy as it becomes a hub for intellectual exchange and a center for shaping the future of governance, both in India and on the global stage. Thank you, and all the best for a bright future ahead. Thank you, ma'am. I would again like to request all the esteemed dignitaries on the dais to observe the scheduled time outlined in the agenda. Now may I invite Dr. Chandraprakash Dwivedi, Indian actor and film director, to deliver his remarks to the audience. नमस्ते भारत। आदरणीय बिरला जी, मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और साथियों, समय बहुत कम है, सीधे बात पर आता हूँ। प्रजा के हित में राजा का हित है, यह कहने वाला आचार्य विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, उसका वर्णन मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने किस तरह से किया है। मुद्रा राक्षस में वो नगर से बाहर रहते हैं, एक कुटिया में, जिसके बाहर एक रस्सी लगी हुई है, जिस पर 2 वस्त्र टिंगे हुए हैं। कुटिया के बाहर एक पत्थर है। पत्थर क्यों है? यज्ञ के लिए, उपलों को तोड़ने के लिए, और समिधा है। ऐसा है भारत के पहले ऐतिहासिक प्रधानमंत्री का घर। अब एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है आपको बात समझ में आ जाएगी। मगध विजय हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को इस परिवर्तन से पीड़ा हुई। ऐसे में एक उद्योगपति है जिसे बहुत पीड़ा हुई, और वह आचार्य विष्णुगुप्त से मिलना चाहता है। वह आचार्य विष्णुगुप्त की कुटिया पर पहुंचता है। बाहर उसे प्रतीक्षा करने को कहा जाता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात हो गई, पर आचार्य ने अभी तक समय नहीं दिया है। लोग भीतर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अंत में सूरज ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है। आचार्य ने उसको समय दिया। यह उद्योगपति आचार्य के सामने जाकर बैठा। कमरे में अंधेरा है,
दिए की एक रोशनी में आचार्य कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने सर उठाकर भी उस व्यक्ति को नहीं देखा कि ये कौन है। आचार्य ने पूछा कि तुम जो मुझसे कहने आए हो वो सार्वजनिक हित में है या व्यक्तिगत हित में है? इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इज इट इन योर इंटरेस्ट? क्या पर्सनल इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट है? उसने कहा इट इज अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट। आचार्य ने उसी समय जो दिया जल रहा था उसकी लौ फूंक मारकर बुझा दी। कमरे में अंधेरा हो गया। इस उद्योगपति को समझ में नहीं आ रहा है एक ही दिया था, उसको बुझा क्यों दिया? तो आचार्य ने कहा कि राज्य से मिलने वाले तेल को मैं तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं जला सकता। ये है पब्लिक पॉलिसी। इसका विस्तार बहुत बड़ा है और पब्लिक पॉलिसी कोई आचार्य कौटिल्य के समय से ही नहीं शुरू हुई है, वो वैदिक काल से है। इस पर फिर कभी बात करेंगे, आज समय बहुत कम है। लेकिन जैसा मैंने वर्णन किया, मैं यहाँ के 30 कैंपस में गया, मैंने देखा हर जगह किंग्स पैलेस, क्वींस पैलेस, यही लिखा हुआ है ना। तो जहाँ किंग्स पैलेस है, क्वींस पैलेस है, तो वहाँ चाणक्य की कुटिया भी होगी। उसको ढूंढना है। उसको यदि हमने ढूंढ लिया तो हमारा ये प्रयास सार्थक होगा। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं। फिर मिलने के वादे के साथ हमारे अच्युत सामंत जी को मैं अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार का काम किया है ये अविश्वसनीय है। और यदि इस कार्य में, इस यज्ञ में हम लोग भी एक समिधा डाल सकें तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मैं तैयार हूं। धन्यवाद। Thank you, sir, for your words. May I now request Srimati Aprajita Sarangi, Honorable Member of Parliament Bhubaneswar, to share her insights with the audience. Honorable Speaker, Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Speaker, Odisha Legislative Assembly, Madam Surma Padhi, Honorable Deputy CM, Shri Kanakvardhan Singh Dev, Honorable Minister, Shri Prithviraj Harichandan ji, all the esteemed guests and hosts on the dais, and of course, our very dear Achyut Samantaji, the lighthouse for all of us, and all of you, my dear friends from Bhubaneswar and beyond. It's indeed a pleasure and privilege for me to be here, and I can only say that one life is not enough to achieve what Shri Achyut Samant has achieved. एक जीवन इतने जीवन को इतने सकारात्मक तरीके से छूने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आप सब से गुजारिश करूंगी कि जितने भी भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका धन्यवाद करें और उन्हें बधाई दें। Thank you. He deserves commendation. I'm a student of English literature, and I had read a poem of H.W. Longfellow. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. So little time is there with us and so much to achieve. Achyut Samanji has demonstrated before us that time is very precious. Our hearts are beating drums
going to the funeral marches, and that is why every minute is important, and he has been able to achieve what hundreds and thousands of us would not dream to achieve. Friends, another feather in the cap. 30 campuses already there. 40,000 tribal children, not only from Odisha, from adjoining states, studying here. And still, there is an aspiration, there is a dream to touch many more lives. And therefore, this collaboration among these three partners, KIIT, United Nations, and Indian Council of World Affairs of the Ministry of External Affairs of Government of India, I congratulate Professor Achyut Samanji and his entire team for having conceptualized the idea of this public policy course. 1-year course with 60 students, a cohort of 60 students, and partnering with 2 prominent agencies. I'm reminded of a line from Thomas R. Dye. He is Professor Emeritus of Columbia University. He was asked to define public policy. What is public policy? I was a bureaucrat for 24 years, and now for the past 6 years, I'm a policy maker. I'm in the Lok Sabha discussing the bills. My dear friends, Thomas R. Dye defined in a very beautiful way. He said, public policy is what a government chooses to do or not to do. So to do or not to do is the question, whether we should do this, whether we should not do this. On 26 May 2014, Prime Minister Modi took the reins of this country as the Prime Minister. I was a bureaucrat then. I was a Joint Secretary in the Ministry of Rural Development, looking after MGNREGS implementation, the largest anti-poverty program in the world. And at that point of time, Honorable Prime Minister Modi told all the bureaucrats, including the then members of Parliament, Honorable Speaker Shri Om Birla ji was in the Lok Sabha then, 2014. He said, I want minimum government and maximum governance. What does it mean? For this kind of idea to be translated into reality on the ground, the right kind of public policy is required. How do we achieve this? The right designing, which actually captures the dreams and aspirations of the people on the ground, and implementable policies, so that we are able to actually deliver what we intend to deliver through the implementation of these programs and schemes. So, my dear friends, this particular initiative of Professor Samant and his entire team was much awaited, and this is definitely a feather in his cap. This institution, KIIT, is growing by leaps and bounds. And I tell you, yes, I have not been able to visit this institution because I was engaged elsewhere. A doctor is known to the patient. A doctor is not known to a healthy person. Here is a healthy person. I had to be everywhere in the state because we had to remove that government. I had to be here in Odisha, in Bhubaneswar, elsewhere. I knew Professor Samant was doing great job here. But it was a delight today to be here with Shri Om Birla ji to move around and meet the children here, 40,000 children. Imagine what kind of work he has been doing, 30 campuses. A lot to learn from him. And of course, his humility is disarming. Isn't it? I think all of you should know this. His humility is disarming. We can always hope for the best for him and his institution. 2 lines come to mind. Good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better best. From good to better and better to best, that's what we hope for this institution. Thank you so much. Thank you, ma'am, for the address. May I now request Mr. Otto Rehman Sonnenhauser-Spur, former Vice President of Ecuador, to extend a message to everyone gathered.
Good night, everyone. Can you hear me? Yeah. I know you have Diwali parties to go to, so I'll be brief. Thank you for having us here, especially you, Dr. Samantha. For my wife and I, this long trip of many hours from Ecuador to India has been worth every minute. Only experiencing what I have heard so many years from my friend Dwiti Vikramditya about what you do here, it has been priceless. You don't have to hear about it, you have to feel it. This is all about feeling. What you have achieved here is really an example for the rest of the world. And I'm happy that now you're taking the next step and building a public policy school. Because if you want your impact to be bigger, you need to implement public policy, right public policy. And people from countries like mine, which is far from India but not very different, are always sharing the same hope and dreams, a better life, better opportunities, happiness. And when you analyze, and I'm an economist, when you analyze societies that have thrived, and you analyze all the elements, all the components of progress, you can think of resources, you can think of history, you can think of culture, even weather. And the only constant you will find is that nations that thrive have only one element in common, and that is trust. Societies that build trust based on respect thrive. Respect of the others, respect of nature, respect of differences, diversity, just like at KISS. When you build trust based on respect, there is a much happier and better future for your nation, for your country. Without trust and respect, societies fragment, institutions weaken, and development potential vanishes. A society where people distrust each other creates unnecessary tension. It doubles efforts and consumes energy that could otherwise be dedicated to overcoming shared challenges. Today we live in a world that doesn't recognize the values that are really worth it, what is positive. Social media, algorithms, they put on the spotlight negative values most likely. And the good values, they're hidden. I think in this scenario, many leaders that I admire wouldn't have made it to politics today because they wouldn't have been part of what the algorithms prioritize. And we would have missed, and we are missing, a lot of good leaders that I'm sure will find a home here at the Kalinga Public Policy School. One message for the students here. If what you're seeking is fame or recognition, there are other paths, maybe in sports or music. If you're seeking wealth, money, go for business. But if what you're seeking is to change people's lives, you're in the right place here in this public policy school. The path of public service is a path of challenges, especially for those who know that you always have to do what's right, not only what's popular. Taking the right decisions is hard. It feels sometimes ungrateful. But in the end, the time is always the best friend of the truth. And when you know you have done what's right, you will see it in the eyes of the people you have served. So never divert from that path. Thank you very much for the invitation. It has been a pleasure to be here with you. Thank you very much, sir, for your kind words. May I now request the Honorable Minister of Law, Works and Exercise, Government of Orissa, Sri Prithviraj Harichandan, to present his thoughts. Today on this occasion, the
chief guest of the day, who has inaugurated the much awaited KIIT School of Public Research, Honorable Speaker of Lok Sabha, respected Om Birla ji, Honorable Speaker of Odisha Legislative Assembly, Srimati Surma Padhi ji, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Odisha, Sri Kanak Vardhan Singh Dev ji, Honorable Member Parliament from Bhubaneswar, Srimati Aparajita Sadangi ji, former Vice President of Ecuador, Professor N.L. Mitra ji, Ashok Mohanty Mahasay, and overall the great man, the founder of KIIT, KIIS and this family, Professor Dr. Achyut Samant ji, and the invited dignitaries, ladies and gentlemen. Few minutes back, the inauguration process that has been completed, and my congratulations to KIIT family and its founder, Dr. Achyut Samant ji. My heartiest congratulations to you all. This premium institution of our state, this KIIT, KIIS, schemes, they have added another feather to the crown. I think undoubtedly that is the fact we have seen few minutes back. I'm seeing this organization since last 25 years, and I've also observed the distinct path of growth through which they have gone. I have observed Dr. Achyut Samant in these days also. We cannot just say he is only an eminent educationist of the state. Really, he is a visionary, and not only a visionary, he is having a strong determination, commitment and enthusiasm towards education system, and which has given him a great growth, and that is, I believe, that is the way to his success in these days, in these last 25 years. When he started his endeavor here, he was explaining that during his welcome address. When he started this thing, nobody believed that someday KIIT, KIIS and KIMS that will come to this size, like this kind of an institution. Probably we could not believe it. Probably Dr. Samant, he has seen a dream, and he has visualized probably by then, before 2000, that he would be able to bring these institutions to this great height, and it will be something great in the global education map. I think that is his credibility, that is his willpower, that is his thinking process, and that is his commitment towards this. All of us know, he has a very simple life, and probably that has given him energy to do so and come to this particular level. Starting a new faculty like School of Public Policy, definitely it's a commendable step taken by KIIT family. And I believe as far as this model of government is concerned, or the kind of governance what we are looking for, that definitely needs the support of a better public policy at each point of time. Normally, when the system of governance is looked at, this public policy, this policy making part, it becomes a kind of path marker from time to time. Normally in a government setup, when a specific program is designed, a specific
public-oriented scheme is announced, a policy is developed. For statutory things, a policy is designed. This policy formulation part, it's normally happen through this intra-department or inter-department communications, deliberations, which helps us to formulate the policy and implement it. But beyond that, sometimes we feel also, beyond this, if there is something to guide us, if something there is to put in their research inputs, if something is there to develop it more accurately and with a better micromanagement practice, the government programs would be in a better position to reach the people, reach the common people, and the governance model would be much better than what we are having. So, to develop this kind of a thing, we need a team of resource person. We need a team of researchers who would be supporting the government to give better governance or good governance. I'm just giving one or two examples before I conclude. The state has a very robust and intensive excise policy. It is little complicated because in excise policy, both the enforcement part and the control of the revenue generation part, both the things are taken together. After a lot of deliberation, every year the state government in Odisha, we develop a excise policy for the year. But to have a better facilitation in this, to look at all angles of it, to look at every micro level of it, of the operation of the excise department, if more research input can be added to this, then definitely it would be a wonderful policy which will help the society, which will help the government, which will help all the stakeholders involved in this process. Similarly, the state litigation policy the state is having, we have recently, very recently, we have started off with with some amendment, we have formulated State Litigation Policy 2024. But it might be my personal opinion, if some more input can be added, if some people can do research on the litigation policy of the state, whatever is there, like what best can be done, so ultimately the government will be at benefit, the people, they will be at benefit, and I think the judicial system will also get benefit out of that. So my point is, once at least we should look into this kind of a governance, this model of a governance. And basically my intention is to, if we can go for a micro level study of all policies, if you can amend, if you can design, if you can formulate the best kind of public policies as far as the concept of good governance is concerned, definitely we can go ahead, we can march ahead, and by 2036, what we are expecting that we'll have Bikasit Odisha, by that time, our governance model, our policies, those would be the best in the country. I believe we can go ahead with that if actual inputs will be given in this process. So, I think for this concept of mine, or this concept of developing a good governance model, KIIT School of Public Policy can contribute a lot. We can get good support from them also. And the aim is to develop a
good governance model, you can say the best governance model in the country. By 2036, I think KIIT School of Public Policy, they will help us in doing so, they will support us in doing so. That's why I'm again congratulating Dr. Achyut Samant for thinking for getting such a noble idea, and I'm praying to Lord Jagannath that he will bless KIIT family as well as Dr. Achyut Samant to take it forward for further days. Thank you. Thank you very much, sir. It is my great honor to invite the Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Sri Kanak Vardhan Singh Deo, to address the audience. Thank you. I would have become too tall. मान्यवर वाचस्पति लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मान्यवर वाचस्पति उड़ीसा विधानसभा श्रीमती सुरमा पाड़ी जी, मंच पे विराजमान मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी, मंच पर उपस्थित सांसद श्रीमती अपराजिता सड़ंगी, former Vice President of Ecuador, Mr. Otto Raymond, मंच पे उपस्थित डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, उपस्थित अक्षय माथुर जी एवं वीसी के माध्यम से जो लोग जुड़े थे, क्षमा चाहता हूँ उस समय की पाबंदी के कारण मैं सबको संबोधित नहीं कर रहा हूँ। मंच के सामने बैठे सारे डिग्नेटरीज, ladies and gentlemen, friends from the electronic and print media, it is a great privilege and honor to be here on the invitation of Dr. Achyut Samant, and the topic, the public policy. इस विषय को लेकर डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बहुत खूबी से चंद शब्दों में अपनी आप सबके सामने में अपने विचार रखे। पब्लिक पॉलिसी क्या है? योजना जब बनती है तो समाज के लिए बनती, व्यक्ति के लिए नहीं बनती है। उन्होंने अपनी छोटी सी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। एक सरकार जब आती है, उस सरकार की योजना लोगों के लिए होती है, व्यक्तियों के लिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं होती। अभी मैं मनी मन में सोच रहा था वहां बैठ के, श्रीमती अपराजिता सड़ंगी सांसद जी ने चंद बातें आपके सामने रखी। मैं सोच रहा था कि काश डॉक्टर अच्युत सामंत हमारे बचपन में ये सब करते तो शायद हमें भी मौका मिला होता इन संस्थाओं का लाभ उठाने का। एक बात मेरे को बचपन की याद है, मैंने एक दफ़े पढ़ा था, समटाइम्स आई विश आई वर अ चाइल्ड अगेन, फॉर स्किन्ड नीज आर ईजियर टू फिक्स देन ब्रोकन ड्रीम्स। सपना जब देखते हैं, अगर टूट जाए तो उसको जोड़ने की आप लाख कोशिश कर लो, नहीं जोड़ सकते हो। यहाँ पे अच्युत सामंत जी ने जो सपना देखा है उसको साकार करके आपके सामने रखा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने जब किड स्कीम किस की कल्पना की थी, आते थे मुझसे मिलने, क्योंकि उस समय टेक्निकल एजुकेशन शिल्प विभाग के अंतर्गत था। एंड
I happened to be the minister of the industry department at that point of time, and when he would come to me and talk to me of his dream, सच बोल रहा हूँ आज अच्युत जी, मैं सोचता था कि ये पागल है। सही माने में मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, जिस मंच पे मैं आपको पागल समझता था, इसलिए कि ये साकार कभी हो पाएगा, ये सपना कभी साकार होगा क्या? आज मैं आपके सामने शीश झुकाता हूँ कि आपने जो सपना देखा था उसको साकार करके इस जीवन में, जैसे अपराजिता जी ने कहा ना कि एक जीवन काफ़ी नहीं है ये सब करने के लिए, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि इस छोटे से समय में जितना कुछ आपने कर दिखाया है ये प्रशंसनीय है। यहाँ बैठे आपके परिवार के जितने लोग जुड़े हैं, किस किम्स और किट के परिवार जो है, आप सब भाग्यशाली हैं कि आप के पास एक अच्युत सामंत है। उड़ीसा के लोग सब भाग्यशाली हैं, उड़ीसा के आदिवासी सब भाग्यशाली हैं कि अच्युत सामंत जी ने उनको शिक्षा प्रदान करने का उद्यम किया है। मैं और समय आपका नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इन दो शब्दों के साथ महाप्रभु जगन्नाथ आप पे सदा अपना असीम आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। ये संस्था और फले फूले और इसके साथ उड़ीसा का भाग्य मानचित्र को परिवर्तन आप कर सकें। उसमें अगर छोटा सा भी कोई सहयोग हमारा हो सके, उसके लिए हम आपके साथ जुड़ने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। Thank you, sir, for the address. I would now like to request Srimati Surama Padhi, Honorable Speaker, Orissa Legislative Assembly, to deliver her remarks to the audience. Esteemed chief guest of today, Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Birla ji, मेरे पूर्व वक्ता श्री मान्यवर ओडिशा सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव जी, उड़ीसा सरकार के मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी, मंच पर उपस्थित किट, किश और किम्स के प्रमुख श्री अच्युत सामंत जी, उपस्थित NL मित्रा जी, श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शब्द में विषय को उपस्थापन किए थे। उड़ीसा भुवनेश्वर के यशस्वी सांसद श्रीमती अपराजिता सरंगी जी, इक्वेडर से आए हुए फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ओटो एंड उनकी वाइफ कोरेलिया, आई वेलकम यू। मंच पर उपस्थित और सभी महानुभावों, सबको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आज का जो कार्यक्रम रहा,
40,000 ऐसे आदिवासी छात्राओं के द्वारा लोकसभा के स्पीकर महोदय का स्वागत करना और उस स्वागत समारोह में प्रिय अध्यक्ष जी इतने भावुक हो गए हैं, ना सिर्फ ओम बिरला जी, लेकिन मैं भी भुवनेश्वर से रहते हुए मेरा 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि KIIT और KIIS में ऐसे इतने सारे छात्राओं में इकट्ठा पढ़ रहे हैं और इनका एक इतना सुव्यवस्थित अनुष्ठान है। इस अवसर पर मैं कहना उचित समझती हूँ, शायद सामंत जी बुरा नहीं मानेंगे। जब उनका कार्य ये हॉस्टल के नाते शुरू हुआ था, एक स्कूल आदिवासी छात्राओं के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 छात्राएं थे और उस हॉस्टल को परिदर्शन करने के लिए तत्कालीन भुवनेश्वर के विधायक माननीय विश्वभूषण हरिचंदन जी और मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आए थे। सामंत जी के इनविटेशन पर ही माननीय विश्वभूषण जी वहाँ पर गए थे और उस समय जो स्थिति था और आज का ये जो स्थिति है, वो स्थिति कोई मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी। वो इतना छोटा सा यूनिट 8 में टेम्पररी एक हॉस्टल और स्टूडेंट्स के लिए जो बना था स्कूल, ये इतना छोटा सा सपना कभी कभी इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना अचीवमेंट रेट इतना हाई हो सकता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आज जैसे भव्य स्वागत संबर्धना इन्होंने दिया है इस कार्यक्रम की पहले से। आज का जो विषय है, मैं तो धन्यवाद करूंगी अच्युत सामंत जी ने, ऐसे ही एक व्यक्ति जो इतनी छोटी सी विषय को लेकर इतना महान वट वृक्ष पे परिणत कर सकता है, उनके द्वारा ही ये संभव हो सकता है। KIIT KIIS और KIIMS में, KIIT में और एक जो है स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन्होंने जो आज शुरुआत की है, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ अच्युत सामंत जी को और उनके साथ एसोसिएटेड जो मेंबर्स है, जो परिवार है, आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप लोग हैं जो कि ना सिर्फ सपना देखते हैं, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए सबको साथ लेकर सबके साथ सबके सहयोग के माध्यम से और न सिर्फ अपने लिए अपना नाम कमाने के लिए, अपने परिवार अपने जो है परिवारजनों के लिए, बल्कि एक स्वेच्छा से भी भावना लेकर जिन्होंने ये काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ ही यही सपना संभव हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। मैं तो कहूँगी वाइदेश ओपनिंग ऑफ दिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, द स्कोप ऑफ लर्निंग now becomes much wider than its name, because by including new and promising disciplines, public policy is nothing all about solving immediate problems, reflecting on deeper challenges of society and shaping the future. All these things could happen. Good policy comes from careful thought. So, must be, you all have organizedly, you all have thought of such a new policy to come to KIIT premises, for which is the need of the hour. And जैसे हमारे पृथ्वीराज हरिचंदन जी ने बताया अभी कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड पॉलिसी मेकर्स की आवश्यकता है। 2036 तक उड़ीसा स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और तब तक गुड गवर्नेंस के माध्यम से एक विकसित उड़ीसा का जो सपना देखा गया है, उसके लिए पब्लिक पॉलिसी मेकर्स चाहिए। गुड लीडर्स शुड कम फॉरवर्ड एंड उसके लिए कोई एक सुचिंतित सुनियोजित ढंग से एक स्कूल की आवश्यकता थी और एक जो है प्रस्तुति
विकसित उड़ीसा की प्रस्तुति के लिए जो फ्यूचर लीडर्स है उनको कल्टीवेट करना और उनको प्रमोट करना, ऐसे लीडर्स को चयन करना इसकी आवश्यकता थी। इसी क्षेत्र में भी किट यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी उड़ीसा सरकार को विकसित उड़ीसा गठन के लिए सहयोग मिलेगा। जैसे कि अच्युत सामंत जी ने उड़ीसा के गांव-गांव से गिरी कंदर में रहने वाले बच्चों को ला करके शिक्षा की आलोक वितरित की है उनमें, वैसे ही उड़ीसा विकास में उनका यह योगदान हमेशा हमेशा उड़ीसा के लिए उड़ीसा उनको याद रखेंगे। श्री सामंत जी ने ऐसे काम किया। हालांकि हम सब जानते हैं उड़ीसा ऐसा एक प्रांत है, यहाँ पर लीडरशिप का कोई कमी नहीं है। लीडरशिप प्रोडक्शन का ये सेंटर है ऐसे माना जाता है। हम अगर सोचेंगे, हम अगर स्वर्गत पंडित नीलकंठ दास जी के बारे में सोचेंगे, जिन्होंने स्पीकर इन्होंने एक रिमार्केबल जो काम किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, इन्होंने जो नियम प्रणयन किया है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाला चीज़ है। हम सब जानते हैं पंचसखा के बारे में, पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास के बारे में, जिन्होंने शिक्षा का आलोक प्रदान करने के लिए छोटा सा गांव में एक स्कूल प्रारंभ किया था, सत्यवादी वन विद्यालय, जिसका स्वरूप आज हम उड़ीसा में मोहन सरकार में हम एक उड़िया विश्वविद्यालय के नाते हम देख रहे हैं, उड़िया भाषा संस्कृति के लिए, जिसमें और ज़्यादा रिसर्च होगा और जिसमें से और ज़्यादा प्रबुद्ध बुद्धिजीवी निकलेंगे, ऐसे एक विश्वास के साथ हम जा रहे हैं। हम जानते हैं यह ऐसा प्रदेश है जहां माँ सरला देवी है, जो कि पहला प्रोटेम स्पीकर के नाते उड़ीसा महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में जिनका नाम हम लें तो कम नहीं होगा। वैसे माँ रमा देवी, जो कि शिक्षा के लिए एक आलोक वर्तिका है, जिन्होंने अपने उद्यम से कैसे महिलाएं तब घर से बाहर निकलकर वो शिक्षा लाभ करें, और जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी रहे। और महिला जिस आज जो हम कह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, इसका जो धरोहर है माँ रमा देवी, जिसके नाम पर आज उड़ीसा के एक पहला महिला विश्वविद्यालय जिसके नाम पर स्थापित हुई है, माँ रमा देवी महिला विश्वविद्यालय। ऐसे लोगों की उड़ीसा में कोई कमी नहीं है। लेकिन इस क्रम में श्री अच्युत सामंत जी, जो कि अपना 30-33 सालों का कठिनतम प्रयास, और जिसमें कहते हैं कि एक लक्ष्य हमारे सबके सामने एक लक्ष्य रहना चाहिए, लेकिन लक्ष्य पूर्ति के लिए जो निरंतरता चाहिए, जो धैर्य चाहिए, वह उनमें हमने देखा है, जिसके कारण जिन्होंने 30 साल के अंदर अंदर ही उड़ीसा में सारा विश्व में परिचय देने वाला, अन्य अगर कहा जाए तो सारा विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो जानते हैं, पहचानते हैं उड़ीसा को सिर्फ कीट और किस के नाम पर, कीट के नाम पर जानते हैं। ऐसे एक उड़ीसा का एक शैक्षिक परिचय जिन्होंने विश्व को दिया है, ऐसे अच्युत सामंत जी ने आज जो शुरुआत की है स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के इनागुरेशन के माध्यम से, और इस इनागुरेशन के लिए इन्होंने चयन किया जिनको माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी, जिन्होंने कोटा से बिलोंग करते हैं। कोटा जिसको कहा जाता है एजुकेशन हब ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमारे उड़ीसा से भी ज़्यादातर लोग जाकर के वहाँ पढ़ाई करते हैं, और इन लोगों का देखरेख करने वाला, उनका गार्डियन के रूप में जो काम कर रहे थे आज ये विधायक और आज ये सांसद, आज भी जो देख रेख कर रहे हैं हमारे बच्चों को, ऐसे एक विधायक, ऐसे एक सांसद माननीय अध्यक्ष जी को इन्होंने बुलाकर ये काम इनके हाथ से शुरू प्रारंभ किया है। आज इस दिवस पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ अच्युत सामंत जी को, और साथ ही साथ मैं इनके साथ जुड़े हुए परिवारों से सिर्फ इतना गुहार करूँगी कि आप सब लोग साथ रहिए,
एकत्र रहिए और सपना देखें तो एकत्र मिलकर इसको पूरा करने का प्रयास करें, ताकि उड़ीसा का नाम भी रोशन होगा। उड़ीसा और उड़िया की अस्मिता, इसका सुरक्षा करना, ये सब हम सभी उड़ीसा वासियों का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अच्युत सामंत जी को, इनके परिवार को, KIIT एंड की यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों को, और साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और जो आगे इस पब्लिक स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से उभर कर आएंगे, उड़ीसा के लीडरशिप लेंगे, उड़ीसा डेवलपमेंट के काम में जिनका योगदान रहेगा, इन सभी बच्चों को सबको मैं हार्दिक स्वागत करते हुए आप सब बुद्धिजीवियों को नमस्ते करते हुए मेरी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननम। Thank you, ma'am, for the address. Please join me in welcoming Shri Om Birla, Honorable Speaker of Lok Sabha, to the stage to address the gathering with his words of wisdom. Kalinga Institute of Industrial Technology, School of Public Policy के शुभारंभ में हमारे बीच में उड़ीसा विधानसभा की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सुरमा पाड़ी जी, उड़ीसा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय कनक वर्धन सिंह देव जी, उड़ीसा राज्य के माननीय मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी, हमारे लोकसभा में हमारे साथ एक तेज तर्रार सांसद जो अपनी बातों को सदन पर और कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के पक्ष को रखती हैं, श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, इक्वाडोर के एक्स प्रेसिडेंट श्री ओटारेमन टेवर जी, प्रोफेसर सरनजीत सिंह जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, अक्षय माथुर जी, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अच्युतानंद सामंत जी को, जो हमारे साथ लोकसभा में थे। एक सरल व्यक्तित्व, एक सादी जिंदगी, लेकिन दूर दराज आदिवासी इलाके के अंदर एक दिया जलाकर एक रोशनी देने का काम किया। शिक्षा की रोशनी, जहाँ शिक्षा पहुँचती है वहाँ व्यक्ति निर्माण होता है, और जहाँ व्यक्ति निर्माण होता है वो राष्ट्र सशक्त मजबूत होता है। इसलिए देश को सशक्त बनाने में, राष्ट्र को मजबूत बनाने में उन दूर दराज इलाके के अंदर एक कठिन परिश्रम से, लेकिन एक समर्पण था, एक लक्ष्य था, एक जुनून था जीवन में, और उस जुनून को हम पूरा होते देख रहे हैं। विश्वविद्यालय बना, मेडिकल कॉलेज बना, कई इंस्टीट्यूशन खड़े किए,
और आज एक महत्वपूर्ण स्कूल शुरू किया, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति दुनिया के अंदर किसी भी देश को अगर सशक्त बनाना है, किसी भी देश को मजबूत बनाना है, उस देश के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना है, तो कानून पारदर्शी बने, लोगों के लोकहित में हो, और कानून बनने के साथ साथ लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बने जिससे समाज के सभी लोगों को समान रूप से व्यापक अधिकार भी मिले, समानता भी हो, समता मूलक भी हो, और हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण वितरण हो। आज हमें गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत है। जब आजाद भारत हुआ था तो बहुत चिंताएं थी, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि भारत की विविधताएं, धार्मिक विविधताएं, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, भौगोलिक स्थितियां, एक ऐसा देश है जिसकी विविधताएं, डाइवर्सिटी ताकत बन गई, और इस ताकत को बनाने का काम किया लोकतंत्र ने। लोकतंत्र लोगों के मत, लोगों के सामूहिक निर्णय, लोगों के सामूहिक प्रयास, और आज हम कह सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को हमने दुनिया में कहा, अगर देश और विश्व में शांति स्थिरता चाहिए तो वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति को अपनाना पड़े। और इतने बड़े विविधता वाले देश के अंदर केवल विविधता भाषा, बोली, धर्म से नहीं, राजनीतिक विविधताएं भी, जहां एक दल का व्यक्ति भी राजनीतिक दल बना सकता है, एक का व्यक्ति भी लोकतंत्र में भागीदारी निभा सकता है। दुनिया के किसी देश में न तो धर्म में इतनी विविधता है, न भौगोलिक स्थितियां, न संस्कृति, न मल्टी पार्टी सिस्टम। जितना लोकतंत्र भारत में है दुनिया में कहीं नहीं है। और करोड़ों लोग के मतदान, जब हम दुनिया के आईपी जैसे प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा करते हैं कि 620 मिलियन मतदाताओं ने वोट डाला, 312 मिलियन मतदाताओं से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, तो यूरोप की कितनी कंट्री मिल जाए उतनी जनसंख्या भी नहीं है, उतने मतदाता भारत में। और हमारे मतदान प्रणाली, जिस पर आज तक राजनीति दृष्टि से बोल दें, लेकिन पारदर्शिता है, जवाबदेही है, और इसीलिए 1952 से कई बार सत्ताएं परिवर्तन हुई और सत्ताओं का सहज स्थानांतरण हुआ, क्योंकि हमारे देश की जनता में डेमोक्रेसी पर विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास है। और जिसने लोकतंत्र पर प्रघात करने की कोशिश की, देश की जनता ने उन पर कभी विश्वास नहीं किया।
हमारे कार्य में, हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी कार्य पद्धति में लोकतंत्र है। हमारी कोई भी आपदा, संकट, चुनौती में सामूहिकता है। सब सामूहिकता से मिलकर आपदा चुनौतियों से लड़ते हैं। हमने कोविड जैसी वैश्विक चुनौतियों के अंदर दुनिया को बताया कि हमारी सामूहिकता की कितनी ताकत है, वसुदेव कुटुंबकम परिवार की कितनी ताकत है। और इसीलिए जिस देश में लोकतंत्र सशक्त होगा, अगर वहां पब्लिक पॉलिसी भी ठीक होगी, लोक नीति भी ठीक होगी, चाहे राज्य की पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे प्राइवेट संस्थान की पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हो, हर संस्था की पब्लिक पॉलिसी के अंदर जितने लोगों की सामूहिकता होगी, जितने लोगों का इनपुट आएगा, जितनी अधिक चर्चा संवाद होगा, जितने ज्यादा अधिक लोगों का लोक मत होगा, उतनी ही बेहतर पब्लिक पॉलिसी बनेगी। और जिस राज्य के अंदर, जिस देश के अंदर पब्लिक पॉलिसी नीति व्यापकता भी है, सबके कल्याण के लिए भी है, और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने की भी है, वो देश और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और भारत आज दुनिया में आगे बढ़ रहा है। भारत की ताकत, भारत का सामर्थ्य वैश्विक नेतृत्व के रूप में भी आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अंदर एक सर्वमान्य नेता के रूप में, अगर दुनिया में स्थिरता, शांति चाहिए तो भारत की ओर देखता है। और ये विश्वास है दुनिया को, दुनिया के देशों को, कि भारत समान रूप से सब देशों में शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है। वसुदेव कुटुंबकम सारा विश्व परिवार मानता है। और हमारी जब G20 के अंदर बैठक हुई तो हमने यही कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह हमारी नीति थी। हमारी ऊर्जा की पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन सूर्य। हमारी पर्यावरण की पॉलिसी, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी आज दुनिया मान रही है। आज सौर ऊर्जा हो, कार्बन उत्सर्जन कम करना हो, तो हमने दुनिया को संदेश दिया कि हम इतने बड़े देश होने के बाद भी हमने कार्बन उत्सर्जन में जितनी हमारी क्षमता है उससे कम किया और दुनिया को संदेश दिया। और इसीलिए जिस देश के अंदर कानून का शासन होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, पॉलिसी ठीक होगी, उस देश में निवेश भी ज्यादा आएगा। और आज दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो निवेश भारत में इसलिए कर रही है कि भारत में कानून का शासन है, भारत में नीतियां, पॉलिसी है। रोज नीति पॉलिसी परिवर्तन नहीं होती। मैंने एक देश के स्पीकर से ऐसे पूछा, मैंने कहा आपके देश के अंदर निवेश की बहुत संभावनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पानी भी है, बिजली भी है, जमीन भी है, आपके यहां निवेश क्यों नहीं आ रहा? तो उसने कहा कि हमारे यहाँ रोज पॉलिसी चेंज हो जाती है, रोज नीति चेंज हो जाती है। जिस देश के अंदर रोज नीति चेंज हो जाए, जो रोड टैक्स सिस्टम चेंज हो जाए, वहां पर कभी निवेश नहीं आ सकता। आज भारत में भरोसा है लोगों को,
दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनी क्यों निवेश कर रही है कि भारत के अंदर जो पॉलिसीज है वो पारदर्शी है, कानून पारदर्शिता है, जवाबदेही है, सबके लिए कानून है, पॉलिसीज है, सबके लिए एक पॉलिसीज है। टैक्स सिस्टम है तो एक साथ टैक्स सिस्टम है, सुबह राज पलट जाए, शाम को टैक्स सिस्टम परिवर्तन हो जाए, ऐसा भारत में नहीं हुआ। इसलिए भारत की स्थिरता पर विश्वास है और भारत के निवेश पर विश्वास है। और आज हम गर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ी, हमने सामाजिक कल्याण के लिए व्यापक योजना बनाई। हमने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के अंदर के जीवन में परिवर्तन हो। हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो जिसमें वर्तमान भी हो और भविष्य की संभावनाओं भी हो। और आज हम कह सकते हैं हमारी हर पॉलिसीज वर्तमान भी है और भविष्य को देखने वाली भी है, चाहे एजुकेशन की पॉलिसी हो, चाहे हेल्थ की पॉलिसी हो, चाहे सामाजिक कल्याण की पॉलिसी हो। और आज इसीलिए समाज के अंतिम व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन में कैसे परिवर्तन हो सकता है, हर राज्य ने अपनी नीति बनाते समय समाज के अंतिम व्यक्ति को देखकर अपनी नीति बनाने का फैसला किया। और इसीलिए पब्लिक पॉलिसी में मेरा मत है, समाज के जितने लोगों का अधिकतम योगदान होगा, जितने हम केवल वोट देकर किसी दल, किसी व्यक्ति को सत्ता बनाने के लिए मतदान नहीं कर रहे, हमारा रोज दिनचर्या में हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, इसके अंदर डेमोक्रेटिक संस्थाओं के अंदर भी हमारी सक्रिय भागीदारी रहना चाहिए। जितनी पब्लिक की सक्रिय भागीदारी रहेगी, जितना शासन पब्लिक के साथ चर्चा, संवाद, जितनी उनकी भागीदारी बढ़ाएगा, उतना बेहतर कानून भी बनेगा और उतनी बेहतर पॉलिसी बनेगी। और इसलिए मैं प्रोफेसर अच्युता सामंत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस विद्यालय को शुरू किया, इस महाविद्यालय को शुरू किया, ताकि आने वाला पढ़ने वाला बच्चा, विद्यार्थी, जो भारत का भविष्य है, वो चाहे राज्य की नीति हो, चाहे देश की पॉलिसी हो, चाहे निजी संस्थान हो, चाहे सार्वजनिक संस्थान हो, उन स्थानों के अंदर पब्लिक पॉलिसी के अंदर अपनी भागीदारी निभाएगा। और जितनी जनता लोकतंत्र के अंदर, चाहे कानून बनाने हो, नीति बनाने हो, हर फैसले के अंदर एक लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में हमें सजग रहना चाहिए। एक शासन जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, न्यायपूर्ण हो, समानतापूर्ण हो, सबको समान रूप से न्यायपूर्ण वितरण हो, ये सब जितनी अपनी भागीदारी बनेगी, उतनी ही शासन में पारदर्शिता आएगी। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अपने अपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ऑनलाइन प्रोसीडिंग का हिस्सा है। ऑनलाइन हम पब्लिक डोमेन में देखकर अपनी विचारों को, अपने अभिव्यक्ति मत को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा मत है, अभी भागीदारी कम है, भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने मत और विचारों को अभिव्यक्ति करने की और आवश्यकता है, चाहे कानून बनाने में, जो हमने जिन जिन को विधानसभाओं में, लोकसभा में चुनकर भेजा है, जब कानून पब्लिक डोमेन में आए तो
कानून बनाते से हमारी भागीदारी होना चाहिए। जिनको चुनकर भेजा वह जनप्रतिनिधि, जब कानून पर चर्चा हो, संवाद हो, तो पब्लिक से उनके पास इनपुट होना चाहिए, ताकि कानून बनाते समय विधानसभा, लोकसभा में सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, अपने अपने विचारों को, अपने अपने मत को अभिव्यक्त करें, ताकि कानून बनाते समय जिन पर कानून बन रहा है उस पर बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है। एक कानून बनाने से उसके व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, प्रदेश और देश में बहुत सारे प्रभाव भविष्य में पड़ते हैं। इसलिए मेरा मत है, आग्रह भी है कि कानून बनाने में भी और कोई राज्य या देश या कोई भी विभाग जब कभी भी पब्लिक पॉलिसी बनाए, हमारा उसमें सक्रिय योगदान होना चाहिए। आज भारत तकनीकी के रूप से भी बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे गर्व होता है कि दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों का सामर्थ्य, उनका नया चिंतन, नया इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी भागीदारी हम सबको गौरवान्वित कर रही है। आज दुनिया के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी का नया इनोवेशन हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन में भारत के नौजवानों का योगदान है। दुनिया के कितने ही विकसित देश में आप चले जाओ, उन विकसित देशों के अंदर टेक्नोलॉजी हो या एक्सपर्ट हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर जगह भारत के नौजवानों की भागीदारी है उस देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में। और इसलिए आने वाला समय भारत का है। भारत के नौजवानों से हमारी बहुत आशाएं, आकांक्षाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि भारत का नौजवान लोकतांत्रिक देश में जन्म लिया है। लोकतंत्र उसके सहज जीवन में है, सामाजिक जीवन में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी देश उसके लिए सबसे आगे है। ये भावना, राष्ट्रहित की भावना, देशहित की भावना उसके चरित्र में है। और इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर हमारा सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। जब भी राज्य कोई पब्लिक पॉलिसी बनाए, नीति बनाए, किसी भी विभाग की नीति बनाए, उस समय हमारा योगदान हो, ताकि पब्लिक पॉलिसी बनाते समय एक जवाबदेही पब्लिक पॉलिसी बने, अधिकतम लोगों का उसके अंदर भागीदारी हो। उससे ज़्यादा बेहतर हम लोगों के जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। और इस सकारात्मक परिवर्तन में इस प्रदेश और देश में हमारा भी कुछ न कुछ योगदान हो। इसलिए आज आप यहाँ पधारे हैं। मुझे आशा है कि आज जो ये पौधा लगाया है वटवृक्ष बनेगा और देश के अंदर सभी स्कूल कॉलेजों के अंदर पब्लिक पॉलिसीज पर बड़ी चर्चा होगी। और आने वाला विद्यार्थी कानून बनाने में भी, पब्लिक पॉलिसी बनाने में भी भारत के लोकतंत्र के अंदर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगा, ताकि एक शासन जवाबदेही, पारदर्शी हो और जनप्रतिनिधि भी जवाबदेही, पारदर्शिता बने। जितनी जनता की भागीदारी होगी शासन में, उतनी जवाबदेही आएगी, उतनी नीति पॉलिसी बेहतर बनेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. May I now invite on stage Mr. Akshay Mathur, Senior Director, Asia Society Policy Institute, Delhi, to sum up the inaugural program. Thank you very much, and good evening.
Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Speaker of the Odisha Legislative Assembly, Srimati Surma Padhi ji, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, K.V. Singh Deo ji, Honorable Minister of Law, Works and Excise, Government of Odisha, Shri Harichandan ji. A distinct pleasure to also welcome Otto Ramon, the former Vice President of Ecuador, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha from Bhubaneswar, Shrimati Sarangi ji, Mr. Dwivedi, and other members of the KIIT family and distinguished guests on the dais, as well as everybody in the audience. It's a real privilege and honor to be here. Summarizing a discussion of this magnitude is a Herculean task, and I think maybe the best way for me to do it is just capture it in maybe 5 points from what I heard today. It seems like a real focus on global challenges is the first agenda for the KIIT School of Public Policy. I think with all the inputs today, the school and the administrators have their hands full in actually devising a curriculum that can talk about everything that, all the suggestions that have been made today. And whether it is sustainable development goals or security or good governance or economic development. Connected to this is also point number 2, and I thought I heard a running thread through everybody's presentation that there is a real expectation from the students who come here and when they graduate. I think the journey is not only starting, but the expectations have started because there is such a real need. And I heard from all the honorable members on the dais that they want the students to contribute with good solutions, come up with ideas to make India a developed country. Also, as part of this exercise, I think asking questions about what is public interest, what is public good, what is good governance is going to be key. And I think the institution will be in good stead once they take some of these questions into account. On the third point, I would say, although it was mentioned explicitly sometimes, but I think the energy is palpable and the excitement is palpable that it is happening here in Bhubaneswar and in Odisha. I think it is the credit to Dr. Samantha and the KIIT family, including my friend Dwivedi Vikramaditya here, to actually think of not only having our students maybe studying here and going to Delhi or other parts of the world to learn, but attracting talent here to Bhubaneswar to understand public policy. And therefore, it was, I think part of that, what I heard, was also looking at examples where India can be a case study. I think the Honorable Speaker of the Lok Sabha has said we have so many examples that we can actually take to the world. And so I think that could be one of our first tasks at KIIT. And finally, as point number 5, actually I had only 4 points, but I added one after the Honorable Speaker's speech, that I think while everybody is talking about Dr. Samantha's dream, I get the feeling, Dr. Samantha, that everybody is trying to live this dream through you and through this institution. I think everybody who didn't have a chance would want to contribute in some way. And with that, I wish the entire KIIT family my very best wishes. Thank you for having me. It's been a great privilege and honor. Thank you very much, sir. Let us welcome Shri Ashok Kumar Parija, Honorable Chancellor of KIIT deemed to be University, to deliver his presidential address. Good evening, all of you.
The chief guest of this evening, Shri Om Birla ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Srimati Surma Padhi, Honorable Speaker Odisha Legislative Assembly, Shri Kanak Vardhan Singh Dev, a friend of KIIT and KSPP for long, as you heard, the Deputy Chief Minister, Shri Prithviraj Harichandan, Honorable Minister of Law, Works, Excise, Otto Raman and his very gracious wife who is in the audience, our very own Srimati Aparita Sadangi, Member of Parliament, who has volunteered to be an honorary guest faculty in the School of Public Policy. Sri Chandra Prakash Dwivedi ji, we grew up watching you as Chanakya in the famous TV serial. Professor N.L. Mitra, the real spirit behind this new addition to the feather, to the cap, the new feather to the cap of KIITs. And above all, Professor Achyuta Samanta. So all of you have said so many things about him. And I have always believed, I've had a lot of chats with him about this great institution. And after every discussion, we come to the conclusion that this institution has been created by Lord Jagannath. He always tells me that how can a person like me create something? Many years back, I used to come to this campus, and every time I used to see one new building, I would say, you have become the Vishwakarma of Bhubaneswar. A very simple man. You look at the way he dresses, eats simple food, and he has dedicated his whole life for this institution and public service. All of you know that Mr. Ratan Tata passed away a few days back. And there were so many stories about him in social media. And every time I would relate some of his stories to this great man sitting here. And I will only tell you one, because he has now told me 3 minutes has become 45 seconds. So one day a friend of Mr. Tata came and told him that you have to donate 200 cycles, right, for the disabled. He said, I will do that. He said, no, there's one more request, that you have to come and distribute them. When Mr. Tata was distributing it, one young child looked into his eyes and was gazing at him. So Mr. Tata asked him, what can I do for you? He said, no, I don't need anything more from you. I just want to remember your face so that when I go to heaven, I can recognize you and thank you once again. That is my friend Achyuta Samanta for all of us. Dear Speaker, sir, I am sure that with your good self inaugurating this new course, we will go from height to height, and we will be happy one day if you can come and see our Lok Sabha Speaker delivering a guest lecture, or we will do it online for you. We in KIITs and KIIS always set high standards. I am sure that this institution will be at par with Kennedy School of Governance at Harvard, Stanford Institute of Public Policy of London School of Economics, TIS, etc., etc. So in years to come, with the blessings and good wishes of all of you, we will be there. And I will only end by saying that our friend from Ecuador and his wife had a great time in KISS. I think she was overwhelmed by all that she saw, and she was only kissing the young boys and girls, and they were all so happy. Give her a big hand. Thank you. That's for you.
Thank you, everyone. May I now invite on stage Professor Saranjit Singh, Vice Chancellor, KIIT deemed to be University, to give the word of thanks. Very honorable Chief Guest of today's inaugural program, Shri Om Birla ji, Honorable Speaker of Lok Sabha India, all the distinguished dignitaries on the dais and off the dais, esteemed colleagues from KIIT, KISS and KIMS, and especially dear KIITians, students. Today we gather not just to mark the inauguration of KIIT School of Public Policy, but to celebrate a commitment to shaping the future generation of leaders who will further shape the public policy and will address society's most pressing challenges. Taking the cues from all the distinguished speakers on the dais, I hope all of you understand that in almost all the activities here at KIIT, KISS and KIMS, our honorable founder, Professor Dr. Achyut Samant, keeps our students and at the same time, the basic virtues on which these three magnificent institutions have been created at the center. And these three institutions have been created on compassion and humanity. And as what our honorable speaker has said, probably we'll take that ahead while formalizing various policies under the School of Public Policy which is getting launched. So we are thankful to all the esteemed members on the dais on behalf of KIIT and KISS universities, Shri Om Birla ji, Honorable Speaker of Lok Sabha India, Srimati Surma Padhi, Honorable Speaker, Odisha Legislative Assembly, Shri Kanak Vardhan Singh Dev ji, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Odisha, Shri Prithviraj Harichandan ji, Honorable Minister of Law, Work and Exercise, Government of Odisha, Mr. Otto Ramon Aspier, former Vice President of Ecuador, Srimati Aparajita Sarangi ji, Honorable Member of Parliament, Bhubaneswar, very esteemed Dr. Chandraprakash Dwivedi ji, renowned Indian actor and film director, as well as also the special thanks for all the three senior people, Ms. Nutan Kapoor Marwa, IFS from ICWA, Ministry of External Affairs, Government of India, Mr. Shombi Sharp, United Resident Coordinators in India, Dr. Jafar Jawan, who is representing UNSSC as a director and partner to our KIIT Public Policy School as well, for joining us online. And also on the dais, a very profound regards and thanks to Mr. Akshay Mathurji, Senior Director, Asia Society Public Institute, Delhi, our own honorable founder, Professor Dr. Achyut Samant sir, Ashok Parija sir, our honorable Chancellor, and the former Chancellor, Professor Emeritus, Professor Anil Mitra sir, and all the KIIT and KISS family members of the dais here. Thank you all for joining us in this inaugural program. Have a wonderful day ahead and a good evening. Thank you very much, sir. Now I request everyone to rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आर्जित मांगे गावे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. With this, we come to the end of the inaugural ceremony of KIIT School of Public Policy.